Hello and good evening, everyone. Namaskar, Sastriyakal, Adab. I'm here today to talk to you all lovely people watching me on Facebook, YouTube, and LinkedIn. After a very long time, in the avatar of the founder of Manas Wealth, thanks to the Motherhood Club platform for having me here, for the team to have agreed for me to come and start a new initiative. Wow, Mom. So I'm going to wait for a few of our friends to join in and then take it forward. And if you think that today's conversation would be interesting, do share it with your friends. Yes, wow. Hello, Arusu. Thank you. Thank you so much for joining and always being there. And I hope that I can see a few faces who will be here to support me, cheer me. After all, I'm coming here after a very long time as the founder of Manas Wealth. So, hey, hi, Ila. Thank you for joining in. Thank you so much. Thank you. So, let's just wait for a minute or so before I talk about the wow mom. As it is, Mother's Day is around the corner, just a few weeks, and Mother's Day is going to be here for all of us to celebrate, appreciate. But what mom or which mom am I actually talking about? So let's just hang in there for some time and see who all are going to be here today, this evening, on a Wednesday. I know it's a weekday, but still, I'm expecting and hoping that a few of our members are going to be here who are going to join us. What do you say? All right, it says 5:02. So, once again, welcome everyone at Wow Mom, a new initiative by Motherhood Club and Manas Wealth. Motherhood Club, you all know, a platform which works on health, wealth, and happiness, brings in conversations that are meaningful throughout the week, month, and year. Thank you, Mr. Bhatnagar. Thank you so much. Manas Wealth, whose founder I am, is a financial distribution firm which has been in existence for the last 10 years. The 10th year is running. And I have been in the field of investments, as we call it, wealth management, for the last 21 years. So I'm here to talk about something different. Well, I cannot not talk about finance because that's my passion, that's my strength, that's my forte. But I'm going to talk about something very different today. But let me first introduce that what is Wow Mom? So, Wow, WOW stands for Wise on Wednesday, Wisdom on Wednesday, or Womentoring on Wednesday. Predominantly a women's platform, hence Womentoring on Wednesday. But what is mom? क्या यहाँ जो मॉम है क्या हम एक माँ के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल माँ के बिना कुछ नहीं होता. But the mom that I'm talking about here is a mom who is the manager of money, who month on month runs the house to the T with discipline, with planning, with a lot of management skills. So, we're going to be talking about a wow mom, and I hope over the next couple of weeks on Wednesdays you will enjoy this series called the Wow Mom. I'm going to make it as simple as I can, not bring in many technical jargons. And before I proceed to the conversation that I want to have with all of you, a word of compliance that these conversations are being done to create awareness, impart knowledge and information, and under no circumstances through this particular conversation are we soliciting any advice, any recommendation, or any such thing because we are a mutual fund distributor
and also into financial literacy. So, thank you, Manjuji. Thank you so much. Thank you, all my friends who've joined here. So, let's talk about one important resource attached to a proverb or a saying which was given by बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो शायद आप सबने सुना होगा. Time is money. Would you all agree with me that time is money? If you do, put a comment or put a thumbs up on the chat box. And yes, thank you so much, Ela. If you can share this conversation, it would be lovely and it will really help me to work upon my mission of creating financial literacy, helping to increase that dismal number of just 26 odd percentage in our country. Yes, time is money. Thank you, Repa, all the way from USA. Thank you so much for joining in. Ela says yes. Any other takers? I'm sure many of us is going to agree that yes, time is money. Now the question is, how is time money? समय हमें पैसा तो नहीं देता है. तो अगर हमें समय पैसा नहीं देता तो समय पैसा कैसे है? How is time money? Well, what we are going to talk about, when you start, that is one important aspect. When you start and how much time you give in anything. So let's take it step by step. When do you start? And I'm sure you all have understood that I am purely going to be talking it from a financial aspect. Many of us have this habit of procrastination, and in one of my earlier sessions I did talk about procrastination. टाइम है ना, हम कर लेंगे, अभी बहुत समय है, आई एम टू यंग राइट नाउ, और आई डू नॉट हैव द मनी राइट नाउ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. हम इतने सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, बट लेट मी टेल यू, all these excuses mean nothing, because टाइम है अभी उसको करने का, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. और पैसे नहीं है, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पैसे हैं. क्वेश्चन है कि कितने नहीं हैं और कितने हैं. संगीता, डोंट बी गिल्टी. Don't be guilty. This is the purpose of coming live and having these conversations, that don't feel guilty about it, but action, do something about it. Even if you have a small amount to spare, save, invest, please go for it. Break that myth that you need to accumulate loads of money to actually start your journey into financial investments. No, that is not the case. So समय की जो हम कहते हैं कि कमी है हमारे पास, as soon as you are able to comprehend data, information, conversation, is when you need to begin your understanding about finance, about investment. What does that mean? Which means, as a small child, as a young child of even 5 or 6, you are equipped to understand all about investments, all about finances, all about the basic concepts to achieve that goal that you would have eventually when you grow up. But हम क्या करते हैं? टाइम है, छोटा बच्चा है, इतनी जल्दी हम कैसे उसको इन सब चीज़ों को एक्सपोज कर दें? एंड धीरे धीरे वो जर्नी कंटिन्यू होती है. देन यू स्टार्ट वर्किंग आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर एजुकेशन. वी स्टार्ट वर्किंग. Oh, I've started earning, I've got the money, but I still don't have the time to invest. I'm so busy. I have a job to do, I have a business to run. It further gets pushed back. Then further, oh, now I have responsibilities, and so on and so forth. हर स्टेज पे हमारी जिंदगी के हम पुश करते रहते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे. वो बाद नहीं आता. और जब वो बाद आता है, तो वो एक ऐसे समय पे आता है जब आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर बिल्ड होता है. और जब बहुत सारा प्रेशर बिल्ड होता है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है. और जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तो बाकी चीज़ों का भी स्ट्रेस होता है. हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल. हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं. वी टेक रॉन्ग डिसीजंस. सो इमेजिन दैट वन रिसोर्स
which we always feel is scarce, कि जिसकी हमेशा हमें लगता है कि अरे बहुत कमी है, समय, टाइम, उसी को हम साइड कर देते हैं क्राइसिस सिचुएशन में. यस, आई आर एब्सोल्युटली राइट संगीता. इट इज इन द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन. जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है, और मैं कई बार ये चीज बोल चुकी हूँ, जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है तो हम सरस्वती तो हैं, दुर्गा भी हैं, हम माँ काली का रूप ले लेते हैं, और तब हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को पार कर जाते हैं, इवन इफ इट मीन्स टू बी financially independent. And I have seen it umpteen number of times that when the time, the situation is of crisis, we are wanting to jump onto the bandwagon, and sometimes we take bad decisions. फिर ओहो समय गलत हो गया. समय नहीं गलत है, आपकी एंट्री उस वक्त पे गलत है, बिकॉज यू आर already either grieving, or you're in that difficult spot where you're not able to take rational decision, and by this way or that way you want your money to grow to get you out of that situation. And most often than not, that situation sometimes is not ours, but it is of our family, it is of our spouse, and that's when we step in to help them. So it is important कि आप शुरू से ही, for those who have reached the stage of being a grandparent, for those who are mothers, if your kids are still young, please inculcate this habit and let them learn that time is now. That is the only way you will understand that time is translating into money. Now, that is one part of it. Okay, I'm not going to keep these conversations very long and very technical. बहुत छोटी छोटी हम बात करेंगे. The other thing is कि मान लीजिए कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें किसी ने गाइड किया, सपोर्ट किया, या हमने खुद अपनी नॉलेज पे वर्क किया और हमने कर लिया, बट वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन टाइम एंड वी वांट क्विक थिंग्स, इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना है. आर वी विलिंग टू इन्वेस्ट दैट टाइम, वन, in terms of educating ourselves, that is financial literacy. Two, spend that time with us and our family to come together to understand what the goals of the family are. What is it that we wish to achieve? By when do we need to achieve it? And what is it that we need to achieve it? After we figure that out, then we say, okay, we figured it out. कि हमें ये हमारे बच्चे के एजुकेशन का गोल है अगले 10 साल के बाद. अगर 10 साल तक का गोल आपने माइंड में लेके चले हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट को आप बीच में क्यों निकाल लेते हैं? Why do you get so hassled? Why are you then chasing returns? Stick to your smart goals, or smarter goals, as I'd like to call it. Yes, time is now. Time is always good, but priorities matter. Yes, Mr. Bhatnagar, priorities do matter. But then the point is that if we begin at a right time, gradually, step by step, we get there. For example, for a parent, the education of the child is a priority no matter what. And I say this with a lot more emphasis than anything else, because during the time of COVID, when I was doing my radio sessions, I had questions that came to me that we are in such a trouble situation that our income has stopped or halved. Should we stop sending our kids to school? Now, that situation, yes, was a situation which was unimaginable for all of us. But then the point is that are we prepared for any kind of a situation? Are we trying to create that corpus to sustain us if there is a situation? सिचुएशन बोल के तो नहीं आएगी कि हेलो अब आपका समय खराब होने वाला है तो चलिए ये कीजिए. सो while you prioritize, while you enjoy your time now, enjoy your life now, you need to strike a balance. A balance is of utmost importance in anything that we do in life. कुछ टेक्निकल जागन नहीं देने वाली हूँ, कुछ फाइनेंशियल नंबर्स नहीं बताने वाली हूँ मैं आपको, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट द इंटेंट इज. कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, नंबर्स ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाएंगे. सो आपने अगर आपके बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, आपको पता है जब से आपका बच्चा पैदा हुआ है कि आपको उसकी एजुकेशन के लिए प्लान करना है
बच्चा के पैदा होने के 18 साल के बाद वो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि हाई वो कॉलेज में जाएगा, उसके लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। येस, आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, सो यू मे नॉट नो द एग्जैक्ट amount because you don't know the exact course, but you know how things are progressing. Start your planning from then, so that by the time your child realizes what he or she wishes to do, you have created a cushion for yourself. Because each year that you would postpone it or delay it, your contribution to achieve that goal will increase multifold. It will depend on what the amount is. So I cannot give you a figure, but it will increase progressively. And then you will be caught in a fix. Ki, how do I meet this goal? A goal that you already knew. So there, time does become important, an important aspect. Another thing, when you have invested, please allow your investment the time it needs to grow. Financial markets are volatile. कभी ऊपर कभी नीचे, अनलेस आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोडक्ट में यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में या और किसी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे एक फिक्स रिटर्न आता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल परचेज होता है वो वॉलेटाइल होते हैं। आपको उसे समय देना होगा। जैसे आप अपने बच्चों को समय देते हैं उनके माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और फॉर दैट मैटर जब आप अपने बिजनेस को समय देते हैं या आप अगर कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, आप इमीडिएटली तो उसमें A1 नहीं हो जाते हैं। यू गिव इट टाइम। Similarly, you need to pace it out. You need to give time. You need to utilize those resources in such an effective manner and give it that time that it needs so that your money works for you. Also, in certain cases, when you make that investment becomes important. To give you an example, we've just begun the new financial year, नया financial year start हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं हम में से जो टैक्स प्लानिंग करते हैं ताकि उनको टैक्स रिबेट मिल सके। ऑफ कोर्स अब टैक्स जो स्ट्रक्चर है, जो रिजीम है, वो चेंज हो रहा है, जिसके बारे में रतन कुमार अग्रवाला जी पिछले हफ्ते से उन्होंने अपना वीडियोस डालेंगे, हर फ्राइडे को वो डालेंगे टैक्स के बारे में। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं हमें फेसबुक पे। बट अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, वी वेट फॉर मार्च। पूरा साल हम नहीं करते, और पूरा साल हम या तो उस इन्वेस्ट पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रहने देते हैं, या फिर हम जो भी सबके अपने अपने थॉट्स हैं, राइट, हम उसको प्लान नहीं करते हैं, हम उसको बजट नहीं करते हैं। एंड द रीजन व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस इज कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब आप कभी भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करें तो महीने के पहले 5 दिन के अंदर अंदर आप वो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि आपके सेविंग्स अकाउंट से पीपीएफ के अकाउंट में 5 तारीख से पहले पहले तक आपके फंड्स चले जाने चाहिए, तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलता है। अन्यथा आप सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट से भी जाएंगे और पीपीएफ के इंटरेस्ट से भी जाएंगे। दैट्स अ डबल वैल्यू, आपको दोनों तरफ से नुकसान होगा। दूसरी चीज़, सेविंग्स अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है विज़िबी जो पीपीएफ का है, उसमें ऑलमोस्ट 3-3.5% का अंतर है। और पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है एज वी स्पीक, एज पर द करंट रूल, इज टैक्स फ्री। तो आप क्यों उस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रख के मार्च में ट्रांसफर करेंगे? पूरे साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा क्यों नहीं आप उस पर अर्न करना चाहेंगे? यहाँ बात आ सकती है कि भाई आई हैव अदर प्रायोरिटीज। आप फंड्स एक्यूमुलेट करके रखिए, मंथ ऑन मंथ पैसे को जोड़ते रहिए और फिर कर दीजिए। या अगर पूरा अमाउंट नहीं कर सकते हैं जो आपको करना है, कुछ पोर्शन कीजिए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कर दीजिए अगर पूरे 12 महीने का एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें, हम समय बिताएं अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, एकजुट होकर बैठ के उन चीज़ों के बारे में सोचें, तो हम शायद अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं और समय दे पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू हैव अ ग्रेट लाइफ। Thank you so much, Reepa. Thank you. Yes, Ela, point to ponder.
We need to pay attention to these small, small nuances because not many people know. And समय के हिसाब से please update yourself. So net, and as I said, I'm going to keep it a very small conversation, a short conversation rather. Time is of essence, time is money. Please work upon that time management, because अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम नहीं देते हैं और किसी कारणवश हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है, तब भी हम इसी चीज़ को बोलते हैं कि समय खराब है। समय खराब या अच्छा नहीं होता है। वी नीड टू वर्क अपॉन इट, and that is all that I wanted to share with all of you today, that time is money. In case there are any questions, I'm going to be around for another couple of minutes to take those questions. If you think this conversation under Wow Mom was of merit to all of you, do share this conversation so that more and more people get aware about it. And if you want to ask any questions today or later, feel free to ask. Next Wednesday at 5 p.m. Again, I'll be here to have a conversation with you all. I know, not many people spend time on financial sessions. I've been experiencing it for the last 7, 8 years, but that's okay. If there is one person, let that one person experience some knowledge or gain from my end. I could gain some knowledge and information from you. It's going to be a wow moment for all of us. So, you wonderful mommies, manager of money, who are doing amazing things month on month. You are absolutely wow. You are wonderful. And on this Wise Wednesday or Wisdom on Wednesday, thank you so much, everyone who joined here, spared time to become wow and to become moms. Thank you, and thank you. And we will meet next Wednesday. Till then, stay safe, take care, and keep enjoying all the amazing activities that are happening at Motherhood Club. Tomorrow is Thursday. I'm sure there is something very interesting planned. So, thank you. Bye bye. Take care. See you all signing off today at Motherhood Club. Bye bye.